morning everyone. Today we are again here for yoga and physical activity session. And in this morning session today we will do some micro yogic practice and some yogic asana and pranayama yogic abhyasa and satkarma. Today's session mainly based on pranayama yogic abhyasa. And these yogic abhyasa very beneficial for us. So let's come for today's session. First, today we will start our session with Gayatri Mantra. Sit any meditative posture. We trying to sit on Padmasana. First, extend the legs and sit on Padmasana, just like this position called Padmasana. Keep both hands in Jnana Mudra. Back should be straight. Neck should be longer. If you can't able to sit on Padmasana, you can sit on Saralasana. Saralasana, just normally fold your legs. Eyes closed. Normalize your breathings. Adopt Namaskara Mudra and start Gayatri Mantra together. Aum Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Rub your both palms and place your both palms on your eyes, your face muscle, and stretch your both palms in front and look at your palm. Open your eyes with a gentle smile. Okay, stand up everyone. Place both hands on your waist, legs apart according to your shoulder, and go for micro yogic practice. We will start micro yogic practice head to feet. Inhale and exhale, bend your head, touch your chin to the chest. Inhale as much as slow you can, up. Exhale down. Inhale 2. Exhale down. Inhale 3. Exhale down. Inhale 4. Exhale down. Inhale 5. Exhale down. Inhale 6. Exhale down. Inhale 7. Exhale down. Inhale 8. Exhale down. Inhale 9. Exhale down. Inhale 10. Exhale down. Inhale 11. Exhale down. Inhale, come slowly to the center and exhale, twist your head to left side, look back from left shoulder with exhalation. Inhale, come slowly to the center. Exhale, twist to right side as much as slow you can with exhalation. Inhale, come back. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, center. Exhale, left. Inhale, come slowly to the center. And exhale,
Bend your head to left side as much as you can, and don't jerk on your neck. Inhale, come slowly to the center. Exhale right. Inhale center. Exhale left. Inhale center. Exhale right. Inhale center. Exhale left. Inhale, come slowly to the center. And exhale, bend your head, touch your chin to the chest, and go for head rotation. Make a complete circle. 1, fast clockwise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release, come back. Next, shoulder up and down. Come to Samasthiti and shoulder up and down. Shoulder up with inhalation, shoulder down with exhalation. Up, down, 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 and release. And stretch your both arms in front and clutch your fingers. Half clutch, first half clutch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. And full clutch with inhalation and release with exhalation. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Make a fist and go for wrist rotation. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And reverse. 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Release the hands and go for elbow movement. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, and release the hands. Shoulder movement from sideways. 1, 2, and bring your both hands from side to upward, palms touching each other, and with inhalation and release your hands from side with exhalation. Inhale, exhale, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, and release. And next, stretch the arms in front and
bend elbow and place your both hands on shoulder with fingers, elbows together, and go for shoulder rotation. 1, bicep touching to the ear, elbows together. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reverse, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Slowly release your both hands from side. Next, legs apart according to your shoulder. Place both hands on your waist and go for hip rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, reverse, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. And release. Normalize your breathings. Next, side bending. Legs together, feet together. And inhale, raise your left hand above the head, left bicep touching to the ear, and fingers separate. And exhale, bend to right side with exhalation and look up. Inhale, come back. Same with the opposite hand. Raise your right hand above the head, right bicep touching to the ear. And exhale, bend to left side and look up. And hold here 5 to 10 seconds. Inhale, come back. One more round. Inhale and exhale. Inhale, come back. Same with opposite hand. Inhale and exhale. Inhale, come back and release. Next, Kati Chakra Asana. Legs apart. 1 to 1.5 feet gap in between your legs. Inhale, raise the arm from side. And exhale, twist to left side. Place your right hand on your left shoulder and your left hand behind your back and twine the waist. And look back from your left shoulder. And hold here 5 to 10 seconds. Inhale, come back. Same with opposite side. Exhale, twist to right side. Place your left hand on your right shoulder, your right hand behind your back and turn the waist. And look back from right shoulder. And hold here 5 to 10 seconds. Inhale, come back. One more round. Exhale, left. Inhale, center. Exhale, right. Inhale, come straight to the center and release the hands. And next, bend the knees and place both palm on your kneecap and go for knee movement. 1, 2,
3, 4, 5, 6, reverse, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release, come back. Place both hands on your waist. Stretch your right leg in front and go for ankle rotation. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Reverse. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release, come back. Same with the opposite leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reverse. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Slowly release and come back. Normalize your breathing. Take 2 normal breaths. Now let's come for yogic asana practices. Legs together, feet together. First, we will do Tadasana. Inhale, raise the arm from side, palms touching each other and interlock your finger. And inhale, stretch it out with inhalation. Stand with your toes, heels off the ground, stretch up, bicep touching to the earth, kneecap locked, stretch from your waist, stretch from your chest, stretch from your shoulder and stretch upward, stretch your arms upward. And exhale, release. One more round. Inhale, stretch upward. Hold 5 to 10 seconds. And exhale down. And release the hands from side. Next, Vakshaprasad Yogic Asana. Let's come for Vakshaprasad Yogic Asana. Legs apart, 2 to 2.5 feet gap in between your legs. And stretch the arms in front and bend forward and bicep touching to the earth. Come to Samkona Sthiti. Your trunk parallel to the ground with the exhalation. And inhale, brings your both hands upward in Y shape and arch back. And exhale, slowly, slowly bend forward, come to Samkonasana. Inhale, arch back. And exhale, come to 90 degree. Inhale, arch back. And exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. And release the hands from side. Next, sit on the mat. Next, Ustrasana. First, sit on Vajrasana and stand on your knees. Inhale, raise your left arm above the head and bring your left arm behind your back and catch your left heel with your left hand. At the same time, bring your right hand behind your back and catch your right heel with your right hand and drop your neck back with inhalation and hold here 5 to 10 seconds.
exhale, come back. Normalize your breathings. Next, Sasanka Asana. First, sit on Vajrasana, toes together and heels out, and rest your buttock inner edge of your feet. And inhale, raise the arms above the head, bicep touching to the ear, fingers separate. And exhale, bend forward. Place both palm on the ground and knees apart. Knees apart as much as you can. Knees apart. And try to rest your abdomen to the ground. And exhale, extend the hands toward forward. Towards to forward. And feel the stretch on your arms, your back, spine, your thoracic spine. Inhale, come back. Next, Gomukhasana. Come to Dandasana. Gomukhasana. Go means cow and Mukh means face, cow face. And first, bend your right knee and place your right feet closer to your left knee, just like. And catch your left ankle and place your left heel closer to right gluteal muscle, just like that. Just like. And hold your right leg ankle and place your right heel closer to left gluteus muscle. And your right thigh over to left thigh. You can see this position, cow face. And bring your right hand upward and bend your right elbow and place your right palm center of the back. And at the same time bring your left hand behind your back and also bring your left palm center of the back and try to touch your both hands fingertips touching each other. And first try to interlock your fingertips and second catch your whole palm, just like you can see. And your right bicep touching to the ear and look up, chest upward, and with inhalation and inhale, chest upward and exhale, release. Same with the opposite leg. Bend your left knee and place your left feet closer to right knee and catch your right leg ankle and place your right heel closer to left gluteus and hold your left leg ankle and place your left heel closer to right gluteal muscle. You can see. Now your left thigh over to your right thigh. And so bring your left hand above the head and left bicep touching to the ear, bend your elbow and place your left palm center of the back and bring your right hand behind your back and place right hand palm center of the back. First touch your fingertips each other and try to catch it and catch your whole palm, just like.
and inhale, chest upward, look up, and left bicep touching to the ear. And exhale, release. Release the leg and release the asana. Gaumukh asana, very effective yogic asana for your chest region and for your shoulder. This yogic practice help to increase your shoulder strength and also effect on your chest region and good for your respiratory system and increase your breathing capacity. So let's come for our next yogic practice, pranayama yogic abhyasa. Sit any meditative posture. Sit on Saralasana. Normally fold your legs just like. We can sit on Saralasana. Keep both hands in Gyan Mudra. Back should be straight. Neck should be longer. Relax your shoulder. Normalize your breathings. प्रथम प्राणायाम का अभ्यास हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तत्पश्चात कुछ षटकर्मों का अभ्यास करेंगे। चलिए प्रारंभ करें प्रथम भस्त्रिका प्राणायाम। इस अभ्यास को हम प्रथम सरल गति से करेंगे, द्वितीय में इसे मध्यम गति से, तृतीय में हम इसे तीव्र गति से करेंगे। प्रथम सरल गति का अभ्यास। सांस को पूरा भरना है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब आप सांस भरें प्रयत्न करें कि आपकी क्षमता से थोड़ा सा ज़्यादा भरने का प्रयत्न करें, जिससे कि आपका डायफ्राम अपवर्ड दिखना चाहिए। अभ्यास की दुरुस्त स्थिति का जो मापन होगा वो इस स्थिति से होगा। आपका डायफ्राम अपवर्ड दिखना चाहिए। और एक्सेल करते समय श्रिंक रहे आपका डायफ्राम। इनहेल एंड एक्सेल। चलिए प्रारंभ करें सरल गति का अभ्यास। रिलैक्स। नेक्स्ट मध्यम गति का अभ्यास। Relax. Normalize your breathings. नेक्स्ट तीव्र गति का अभ्यास। तीव्र गति से करने से पूर्व कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। हृदय संबंधी और उच्च रक्तचाप संबंधी व्यक्ति इस अभ्यास को ना करें। सरल गति से इस अभ्यास को करें, वह भी सावधानी पूर्वक। चलिए प्रारंभ करें तीव्र गति का अभ्यास। दोनों हाथों से घुटनों को इस प्रकार पकड़ने, कमर गर्दन सीधी,
सामान्य श्वास प्रश्वास करें प्रथम। चलिए प्रारंभ करें तीव्र गति का अभ्यास। Relax, normalize your breathings. यहीं से इसका एडवांस वेरिएशन, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, उंगलियां खोलते हुए, दोनों भुजाएं आपके कानों पर स्पर्श हों और मुष्टिका बंद करते हुए हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। इस प्रकार श्वास भरते हुए उंगलियां खोलते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, हाथों को सीधा करते हुए आकाश की ओर श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए मुष्टिका बंद करते हुए कोहनियों को पीछे की ओर। यह अभ्यास एडवांस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास है। इस अभ्यास को बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। जब आपको थकान या चक्कर या फिर चेस्ट में पेन का अनुभव हो तो तुरंत इस अभ्यास को विश्राम देते हुए सामान्य श्वास प्रश्वास करें। चलिए प्रारंभ करें भस्त्रिका का एडवांस वेरिएशन। श्वास भरे और छोड़ते हुए। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास अगर जब हम निरंतर 1 मिनट का अभ्यास करते हैं तो यह 3 किलोमीटर दौड़ने के बराबर होता है। भस्त्रिका प्राणायाम का जो लाभ है बहुत ही व्यापक है। इस अभ्यास से हमें कभी भी जीवन में हृदय संबंधी रोग और उच्च रक्तचाप संबंधी रोग नहीं होते हैं। चलिए प्रारंभ करें अगला अभ्यास कपालभाति का। चलिए प्रारंभ करें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। प्रथम हम इसे 30 एंड 40 एंड 50 के स्ट्रोक्स में इस अभ्यास को करेंगे। कमर गर्दन सीधी करें, बैठने की स्थिति दुरुस्त करें, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। स्टमक को धक्का देते हुए रेचक क्रिया के अभ्यास के साथ स्ट्रोक के माध्यम से धक्का देते हुए मेरुदंड के समीप ले जाना है और सांस को पूरा खाली करते हुए इस अभ्यास को करना है। साथ ही आपका स्टमक अंदर की ओर जाए और प्रयत्न करें कि आपके मेरुदंड के समीप लगे। चलिए प्रारंभ करें प्रथम 30 देन 40 एंड 50 के स्ट्रोक्स में। Next 40 strokes. Next 40 strokes. सामान्य श्वास प्रश्वास। यहीं से अगला अभ्यास अग्निसार सकल शोधन का अभ्यास करेंगे। श्वास पूरी बाहर खाली करना है और आपके एब्डोमेन रीजन को अंदर की ओर सिकुड़ना है, पूरा मेरुदंड के समीप ले जाना है। श्वास को रोका ही रखें, श्वास ना लें
और उसके पश्चात आपके एब्डोमेन को अंदर ले जाना है और बाहर छोड़ना है, ढीला। अंदर ले जाना है और ढीला छोड़ना है। प्रारंभ में हम इसे बहुत ही सरल गति से अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास के क्रम को और गति को बढ़ाते हुए तीव्र गति के साथ भी इस अभ्यास को करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रथम सरल गति से इस अभ्यास को। पूरा श्वास भरें और बाहर खाली करें। मध्यम गति तीव्र गति अग्निसार का अभ्यास बहुत ही लाभदायक अभ्यास है। एसिडिटी को दूर करने वाला अभ्यास, पेट की मसल्स को मजबूत करने वाला अभ्यास और डायबिटीज में बहुत ही उत्तम अभ्यास। चलिए प्रारंभ करते हैं। अगला अभ्यास हमारा ऊंचाई प्राणायाम का होगा। गले की मसल्स को श्रिंक करते हुए, श्वास भरते हुए एक विशेष प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करना है और आपके श्वास को रोकना है और बाईं नासिका से चंद्रवेदी का अभ्यास करते हुए श्वास बाहर छोड़ना है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस अभ्यास को। अगला अभ्यास भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम का होगा। दोनों हाथों को चेहरे के समक्ष ले जाएं, अंगूठों से दोनों कानों के पटलों को बंद करें। पहली उंगली आपके आईब्रो के ऊपर और दूसरी आपके आईबॉल के ऊपर, तीसरी आपके अपर लिप्स के ऊपर और लास्ट और सबसे छोटी उंगली आपके लोअर लिप्स के ऊपर। भौरे के समान गुंजायमान करना है। जीवा को पटल पर लगाएं और दांतों को आपस में ना मिलाएं। श्वास भरें और प्रारंभ करें। कुछ देर मौन रहें। यहीं से ओंकार का प्रणोच्चारण करेंगे नाभि और कंठ से। ओंकार से उत्पन्न ऊर्जा को अपने अंतर्मन में आत्मसात करें। उस दिव्य ध्वनि, उस दिव्य ऊर्जा को अपने अंतर्मन में धारण करते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएं और तेजी से रखें।
हाथों में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को चेहरे को स्पर्श करें, पूरे आंखों पर और पूरे प्रत्येक तनावपूर्ण अंगों पर पुनः रख करें, पुनः आंखों पर स्पर्श करें, हथेलियों को चेहरे के सम्मुख रखें और एक मधुर मुस्कान के साथ आंखों को खोलें। नमस्कारम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।